Namaste everyone. My name is Shilpa Dhakar. I'm an engineer and I have been doing voluntary service at Spine Care Desk, Art of Living International Center for last 1 year. On behalf of our Associate Director, Dr. Shraddha Singh Tamkar ji, and our entire Spine Care team, I would like to welcome all our esteemed judges and everyone for joining us in the Art of Living Spine Care Yoga and Posture Program, Hope 2022 Drawing and Painting Competition and Exhibition Result Announcement Ceremony. I would like to hand over to Sampada ji for further process of the ceremony. Over to you, Sampada ji. A very good morning to all the respected judges. Jagadev. Let me first thank you all for the time that you have devoted to be a part of this event. And so we have our first judge, Shri Suresh Gangakhetkar ji, a young artist, painter, architect, poet, and a writer. Suresh ji requests you to say something on our theme of drawing and painting, Hope 2022. मैं हिंदी में बोलता हूँ ज्यादातर। जी सुरेश। तो ये कोरोना एपिडेमिक ने घर बैठे बैठे लोगों को जो परेशानी महसूस होती थी, उसमें एक विचार दिया, एक नई ऊर्जा दी है उनके दिल में, कुछ कर गुजरने की। और ये आर्ट एग्जीबिशन और ये कंपटीशन जो आपने चलाया है, उससे उनको वो साधन मिल गया, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का एक मौका मिल गया, और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। कमाल ये हो गया कि इतने सारे 1,500 पेंटिंग्स हमने जो देखे, एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह सब में नजर आया, क्या छोटे क्या बड़े, हर उम्र के लोगों ने पूरी सोच के साथ कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश की। और यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है इस आर्ट कंपटीशन और एग्जीबिशन की। यहाँ तक के मुझे ऐसा लगता था व्यक्तिगत रूप से कि मुझे भी उनसे कुछ सीखने मिला है। ऐसा लगता है कि ऐसे और आयोजन किए जाए जिससे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, आपसे हिंदी में सुनकर बहुत अच्छा लगा। So let's move on to our second judge, Shri Dayanand ji, popularly known as Daya Arts. Daya ji, I request you to talk about art scenario in this time. See, okay. It is said now, both right brain and left side of the brain should be balanced. Here, one of the friend was telling, in this pandemic, there is no brain at all. So, see, this event has given us a hope. The children are actively involved in this name, at least, in this bahana, they try to create something new, something connected. So the art activity has been promoted, generated now. So I feel, so looking by viewing all those paintings, I was very happy. See, generally, we go to so many paintings competitions, we see that standard is very low. In this, I found it is some of them are very excellent, very, very good, creative, and professionally, also, quality-wise, also it was very good, satisfactory. I was very happy involving this. Thank you for joining me in this fold. Thank you very much. Thank you so much, Dayaji, for words of wisdom. And let's listen to our third judge, Mithu ji. She is an artist, writer, owns Dolna Art Gallery. She is vibrant and full of life. So Mithu ji, may I ask you something about oxygen and breathing and its relation to art and life?
Lovely. I like your question. Thank you. So, you know, Harvard School has just explained something very beautifully. And it's about the complete person being a person with the 3 H's, H, the alphabet H. So he said that if you just work with 1 H in your life, then that means you're only using your H for hand, which is a skill. And if you're using 2 H's, that is H for hand and H for head, then what you're doing is, sorry, I'll just come again. The first one was labor. Only hand is labor. Sorry. And with the head and the hand, it is skill. And when all the 3 H's come together, that is hand, head, and heart, then that work becomes art. So breathing and oxygen is our life. So if we are living human beings, then we must, especially I'm so happy that you've involved children, they must realize that whatever they do in life, whether it's a job, whether it's something at home, or whatever else, it must be a culmination of the 3 H's. And you then become a complete person and you're passionate and you do whatever you need to do in totality. So oxygen is the life breath and the 3 H's are the completeness of life. I see connectivity in that. Great. Thank you, Mithu ji, for all the H words of wisdom. You have very beautifully related it to our topic, oxygen and breathing. Thank you very much, Mithu ji. Now let us move to our fourth judge, Aruna Phatak ji. Aruna Phatak ji is an artist, designer from JJ School of Arts. She has also participated in many art exhibitions as a participant and also as a judge. Aruna ji, can you tell us something about environment and breathing? How best we can relate them to the World Environment Day today? Yes. नमस्ते. मैं पहले सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ और सभी को जय गुरुदेव बोलना चाहती हूँ. जय गुरुदेव. हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी के वजह से हम यहाँ पर हम सब मिले हैं. तो बीतू जी नमस्ते, दया सर नमस्ते, सुरेश सर जी नमस्ते, श्रद्धा दीदी नमस्ते, संपदा एंड शिल्पा, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग. नमस्ते. तो आप सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई. चित्रकला, ड्राइंग, ये एक अभिव्यक्ति है और बच्चे अपने इमोशंस चित्रकला द्वारा अभिव्यक्त करते हैं. और ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में कुछ 3 सब्जेक्ट दिए थे. उसमें हमारा जिस पे मैं बोलना चाहती हूँ वो सब्जेक्ट था एनवायरनमेंट एंड मेडिटेशन. तो पर्यावरण और ध्यान, इनका बहुत गहरा संबंध है. तो जैसे पर्यावरण में क्या आता है, सजीव आते हैं. पर्यावरण में पेड़ आते हैं, पंछी, प्राणी, मानव. तो वो सजीव कैसे हैं, हम कैसे समझ सकते वो सजीव है? तो वो हमेशा श्वास लेते रहते हैं और श्वास लेने से हमारी नॉर्मल लंग्स कैपेसिटी 30% होती ही है. पर हमारी जो सुदर्शन क्रिया है जो गुरुजी ने सिखाई है, वो अगर हम रोज करते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी 100% बढ़ सकती है और हमारे अंदर चैतन्य निर्माण होता है. अब ये एनवायरनमेंट में रहकर हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है. सजीव के सभी के एकत्रित रहने से
वो पर्यावरण पूरा होता है। पर ध्यान जो रहता है, अब हम पहले जो बुद्धा जी थे हमारे, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो उनका ऑरा इतना बड़ा था, 500 किलोमीटर तक उनका ऑरा रहता था। और ध्यान में परिवर्तन होता है तो उनके ऑरा में कोई भी व्यक्ति आते हैं 500 किलोमीटर के अंदर, जब भी वो व्यक्ति आने लगता है और जब तक बुद्धा जी के पास पहुंचते हैं तब तक उनमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, क्योंकि बुद्धा जी जो उनका मेडिटेशन द्वारा जो उनका ऑरा है, सकारात्मकता है, वो ध्यान से सकारात्मकता अपनी बढ़ती है। सकारात्मकता जो है वो बढ़ने से हमारा संतुलन अपने शरीर का भी अच्छा होता है। तो मेडिटेशन, ध्यान यानी क्या? सजगता से सोना। तो ये हमारा पर्यावरण और ध्यान का आपस में गहरा इस तरह से संबंध है और वो हमेशा रहना चाहिए, तो ही मानव बहुत सुखी बन सकता है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा जी, आपने आर्ट और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से जोड़ा और अच्छे से बताया हम सबको। थैंक यू, धन्यवाद। Now let's move to our fifth judge, Shraddha Singh Tamkar ji, an artist, painter, poetess, music lover, faculty of the Art of Living programs. She is also the director of AOL Trust Spine Care Yoga and Posture programs, coach and yoga trainer, devotee of Pujya Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, and a meditator. श्रद्धा जी, आपसे क्या पूछे, ये आपका ही आइडिया था कंपटीशन और एग्जीबिशन। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सब के बारे में और स्पाइन हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू संपदा। वैसे थैंक यू आप सभी को। ये जब टॉपिक मन में आया कि हम कुछ कर सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, थोड़ा सा उत्साह लाने के लिए, शुरुआत यहीं से हुई थी, that we bring about a wave of joy, happiness and little transition from all this that is going on in the surrounding. And with that thought, this event came into being. And then the topic came up eventually as Hope 2022. और जैसे टॉपिक कहता है कि एक आशा है जीवन के लिए कि हम सब 6 महीने साल बाद सब एक सुंदर माहौल में फिर से मिलेंगे, एकत्रित होंगे और अपने सामान्य जीवन में फिर से वापस आएंगे. So it came like this, and then the other 3 topics have our esteemed judges have already spoken about them. And spine health and immunity, of course, it is my field. तो ये मेरा ही फील्ड है. मेरे साथ 150 टीचर्स की एक टीम है जो हम स्पाइन के प्रोग्राम्स लेते हैं. तो स्पाइन और या रीढ़ की हड्डी जो है, ये एक पेड़ के ट्रंक कहते हैं ना, like a trunk of a tree that carries everything and gives life and brings about the flowering, fruiting and the leaves or the blossoming of a tree. The spine is just like that. It's the ये आधार है अपने जीवन का, और इसके जरिए हमारे सारे नसें नाड़ियां बाहर आती है और शरीर के कण कण में जाती है. तो all this, the play of energy of our life, the very act of breathing itself is stimulated through the nervous system in the spine. So spine health is very important for immunity. And all these 3 topics, somewhere while drawing and participating, children have gone through Google search, and adults have also gone through Google search, and they have learned a little about these 3 topics. And I think that itself solves the purpose, that we know how to take care of ourselves and know the importance. And what more beautiful than art, drawing, painting to express these views without any words. So thank you, Sampada, and thank you, Shilpa, and thank you all of you for being a part of this program. And not to forget, we have one more volunteer with us, Ashutosh Yadav, who is Yes. proprietor of Designo Monkey,
And he is the one who has rolled out all these videos and all the scene behind the curtain. And special thanks goes to Shri Shri Tattva Ojasvita. This entire event and the prizes are powered by Shri Shri Tattva. And over to Shilpa now. On behalf of entire Spine Care team, I would like to thank our esteemed judges and our Associate Director, Dr. Shraddha Singh Tamkarji, for taking out your valuable time for this ceremony and giving your valuable insights as well as inspiration for taking us into the beautiful world of arts. I would also like to thank our dear Sampada ji. She is a very enthusiastic young volunteer as well as teacher at Art of Living. She is pursuing her Bachelor of Fine Arts in Animation at Shri Shri University. And I would like to congratulate her for beautifully connecting us, all of us together for the ceremony. At the end, I would like to congratulate all our participants for this wonderful work they have done, and for, in this tough time of Corona, for bringing out this creative energy and putting the like with all your creative energies you have put in this art, and we are very thankful for your participation. Thanks a lot. Jai Gurudev.